नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हैव यू एवर कम अक्रॉस अ सिक्योरिटी और अ स्टॉक जिसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली अपवर्ड मूव कर रही हैं, बट देन द प्राइसेस फॉल डाउन हार्ड एंड फास्ट? साउंड स्ट्रेंज, राइट? यू बेट इट डज। लेकिन मार्केट्स में ऐसे अकरेंसेस फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, एंड बिहाइंड देम आर वेरियस फैक्टर्स एट प्ले। एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स अकाउंट फॉर दीज फैक्टर्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग। और आज के पॉडकास्ट में वी आर गोना लुक एट समथिंग दैट इज कॉल्ड अ whipsaw. Sounds like a carpentry term. It actually is. Listen to this cool anecdote from one of my meetups a few days ago. मेरे और कौस्तवी के एक म्यूचुअल फ्रेंड ने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था which had been bullish since the last couple of weeks. मार्केट में सभी लोग बात कर रहे थे about how they had hit a fortune, but then the prices began to fall. But here is the more interesting part. Prices सिर्फ fall नहीं हुए, they rallied down like an iron ball dropping from the sky. Kostavi said, "You just got whipsawed, brother. My condolences." And then all of them started laughing. While he had diversified well enough to take that as a joke, a whipsaw can actually leave investors whipsawed, or at least their wealth. Sounds confusing, है ना? Whipsaw actually comes from carpentry. Do you know how lumberjacks cut wood? By making long pushes and pulls on a piece of wood with a saw. इस एक्शन को बोलते हैं whipsaw, and that's exactly where whipsaw derives its meaning in the context of stock markets. So when an investor invests in a security and उसकी prices suddenly और abruptly opposite direction में move होती हैं, तो इस movement को whipsaw बोलते हैं. Sounds pretty cool, है ना? Well, maybe not so much if you or someone you know has been whipsawed in the past. In fact, the word itself is very common. If you Google stocks whipsaw, आप इस फ्रेज को कई हेडलाइंस में देखोगे. But beyond words, what is actually happening behind the scenes, or shall I say behind the graphs? Basically, whipsaw speaks of an abrupt price movement, जिसका मतलब ये कि this movement is not expected. So, if you talk about a short seller, then they can get whipsawed when they enter a position at the bottom of a market. On the other hand, अगर कोई long position enter करता है at the peak of a security's price, only to see prices running downward afterwards, they have been whipsawed too. Financial Times published a news report this February जिसमें they pointed out how US stocks whipsawed due to the coronavirus pandemic. वहीं एक महीने पहले Wall Street Journal ने रिपोर्ट किया था कि S&P 500 is touching new heights. This is a classic example of a whipsaw, जहां मार्केट्स बुलिश थे और पीक्स टच कर रहे थे, वहीं एक दो हफ्ते के अंदर they had touched a record low. इसको सुनकर आप whipsaw का मतलब बेहतर समझ पाए होंगे, है ना? Basically, whipsaw is not a pattern, और इसके underlying causes can be very, very different. In the example we just talked about, the pandemic was the ultimate cause because of which companies are failing to stay profitable. Whipsaws usually volatile markets में देखने को मिलते हैं जिसमें price fluctuations are unpredictable. So, can you also get whipsawed too? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो यू प्रोबेबली नो दैट आप टेम्पररी लॉस से अनअफेक्टेड रह सकते हो. बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग रन, द स्टॉक्स रिकवर एंड द प्राइस फ्लोज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट. लेकिन शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडर्स आर वेरी यूज्ड टू गेटिंग whipsawed. So essentially, whipsaw refers to any price movement जो किसी ट्रेड या बेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है. एंड हाउ डू वी अवॉइड गेटिंग whipsawed? ये आंसर इतना इजी नहीं है, और ये इसलिए है क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस विल रिक्वायर डिफरेंट रिएक्शंस. किसी सिचुएशन में whipsaw होने के बाद भी मेकिंग अ प्रॉफिटेबल एग्जिट माइट नॉट बी पॉसिबल. इन सच अ सिचुएशन अपने लॉसेस को मिनिमाइज करके एग्जिट करना इज द वाइजेस्ट. इन अनदर सिचुएशन, एनालिस्ट्स आपको रेकमेंड कर सकते हैं कि यू शुड वेट आउट दिस मार्केट बॉटम. While situation-specific advice has its own place, some of the golden rules still continue to hold. For example, a whipsaw might affect only one security or industry in particular. अब पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, people who invested heavily in aviation and hospitality stocks had to catch some big losses. लेकिन हेल्थकेयर जैसी हिस्टोरिकली स्टेबल इंडस्ट्रीज ज्यादा इफेक्ट नहीं हुई, और इनफैक्ट हेल्थकेयर में काफी ग्रोथ भी देखने को मिली. Making your own way out of a whipsaw is complicated and requires expertise and experience. But don't let this intimidate you. After all, securities and markets have crashed in history too. Lekin, on the bright side, they not only recovered, they also touched new heights. अच्छे इन्वेस्टर्स मार्केट के बारे में नॉलेज और न्यूज को कभी इग्नोर नहीं करते, बिकॉज एक्सपर्टीज डजंट कम विदाउट लर्निंग. एंड दैट्स व्हाई angelbroking.com आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आपकी लर्निंग कभी ना रुके.
आज के पॉडकास्ट के इस टॉपिक में हम इतना ही कवर करेंगे, पर आपकी लर्निंग यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बोला, www.angelbroking.com पे जाइए, वहां पे और पॉडकास्ट्स हैं, वहां पे और मीडियम्स हैं जिससे आप अपनी मार्केट की नॉलेज को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो जाइए, सीखिए और इन्वेस्ट करिए। मिलेंगे फिर से एक नए पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए अलविदा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।